those who are in position, they will come here. Sarva upadhi vinirmuktam. We're not supposed to have any positions. I didn't want any positions. My Guru wanted some position. So I'm trying to get those positions for him. The duty of disciple is to serve their spiritual master, fulfill the desires of Guru. That is the duty of disciple. पूज्यपाद महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्ण बलराम स्वामी महाराज प्रपाद की भागवत धर्म समाज संस्थापकाचार्य अस्मिन् त्रिवेणी संगम स्थले माघ मासे पर्व समये कुंभ समये श्री अष्टोत्तर 61 उपाधि भूषितवान् रामानंदाचार्य गुरुवर्याः श्री श्री वल्लभाचार्य महाराज श्री सम्मुखे श्री जगद्गुरु पदेन प्रतिष्ठितं वर्तमान समये श्री कृष्ण चैतन्य मध्य गौड़ेश्वराचार्य श्रीपाद कृष्ण बलराम स्वामी जी महावर्याः श्री श्री राधा गोविंद पीठाधीश्वराः अद्य पदेन प्रतिष्ठितं तर्हि पूर्वमेव गणेशाम्बिकेः एवं नवदहादि आवाहितेकारां पूजनं प्रतिष्ठापनम् आवाहनम् अद्य ब्राह्मणद्वारा करिष्ये अथवा कारयिष्ये। वनस्पतिर्मधुमान् आस्तूर्जाः दीर्घावो होमग्रह मधुष्ठानान्ते सुधोदक इष्टागम समृगामेति भूमेर्मा कलशाधिष्ठादेवताभ्यो नमः शरणपादुकेभ्यो नमः शर्करा इष्टान् ओम अपाद्यं रसमुदवा शक्तं सूर्ये सन्दक्तं समाहितं अपाद्यं ससजो रसतम्भो मृतं उपयाग्रहीतो सिंद्रायत्वाच शङ्गना बेकते चो निरन्द्रा यद्वाच समम्म थोड़ा चरणों में डाल दीजिए। ततो विराट जायत पिराजो अधितोरुखः सजातो अतिर्यतवचा भूमिमुखो गुणः प्रसादया सर्वहुतः। ओर्धन्जिगातुभेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
निर्वाणी अखाड़ा मध्यस्थे मोहनदास महाराज श्री राष्ट्रीय महासचिव श्री नंदराम जी महाराज श्री शब्द देवता जी महाराज श्री मंत्रीवर्य काकी अखाड़ा श्री प्रेमदास जी दिगंबर अखाड़ा श्री महंत राम किशोरदास जी शास्त्री महावर्या वैष्णवदास जी महावर्या राष्ट्रीय महासचिव जानकीदास जी महाराज श्री बलरामदास महाराज श्री निर्मोही श्री महंत राजेंद्र दास जी महावर्या रामजीदास जी राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र दास महाराज श्री महेश दास जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम महंत श्री राजेश दास जी महाराज राजेश राजू दास जी महाराज राजेश दास जी पहलवान महाराज श्री रमेश दास जी महाराज डॉक्टर महेश दास महावर्या एवं गोपाल दास महावर्या साथ ही चतुर संप्रदाय फूलडोल बिहारी दास महाराज श्री राजधारी दास महाराज श्री सावरिया बाबा महाराज श्री हनुमान दास महाराज श्री अन्य जे विद्वांसा संता वयोवृद्धा ज्ञानवृद्धा अस्मिन् सभास्थले उपस्थिताः संतान ते जगद्गुरुवर्या कृष्णकुमार दास महाराज श्री जयराम दास महाराज श्री एवं संत महंत महामंडलेश्वर आदि उपस्थिताः संतान ते अस्मिन् स्थले सर्वे जनाः स्वागतं कुर्वन्तु। अस्य अध्यक्षस्य पदेन प्रतिष्ठितं श्री अस्य कार्यस्य अध्यक्षाः श्री जगद्गुरुवर्याः अष्टोत्तर एक शास्त्रपाठ भूषितवान् श्री श्री वल्लभाचार्य महाराज श्री अध्यक्ष पदेन अद्य प्रतिष्ठितं तर्हि शोभनं संजाता। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मंचासीन द्वाराचार्य जी महामंडलेश्वर एवं श्री महंत महंत उपमहंत और आगंतुक वैष्णव जन आपको मैं तृणदंते निधाय साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम कहाँ मिलेगा? साधुनाम बहुवचन है, एक वचन नहीं। हम जाते हैं किसी मंदिर में, हमको एक दो साधु मिलेंगे। यहाँ जो महंत महामंडलेश्वर द्वाराचार्य जगत गुरु बैठे, एक साथ दर्शन कर लेना, ये असंभव बात है। ये कल्पतरु है, वांछा पूर्णकारी है। जो आप इच्छा करेंगे इनके चरणों की रज से मिल जाएगी। वैष्णव पद रज, वैष्णव पद धूली, वैष्णव पद जल, वैष्णव भक्त अवशेष तीन महाबल। ये वैष्णव ही, वैष्णव ही साधु हो सकता है। साधवो हृदयम मह्यम, महाराज कह रहे थे, साधवो हृदयम मह्यम। एक साधारण पुरुष नहीं है,
धर्म होता है, लेकिन साधु भजन करने से देश चलता है। मैनेजमेंट से देश नहीं चलता है, देश चलता है साधु की कृपा से। वो साधु है क्या? साधु है भगवान का हृदय। साधु नाम हृदयम तु अहम। क्यों मेरा हृदय है साधु? क्योंकि साधु ने मुझे अपना हृदय बना लिया। साधु भगवान के लिए जिंदा रहता है। साधु दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए जिंदा रहता है। आइए आइए आइए, मेरा पुण्य सब ले जाइए, मुझे अपना पाप दे जाइए। यही है साधु। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, नर मात्रे ये साधु संगे सर्व सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धि हम भीख मांगते हैं भगवान से, हमको अष्ट सिद्धि दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। सर्व सिद्धि केवल साधु के चरणों की कृपा से मिल सकता है। इसलिए वैष्णव पद धूलि, उनके चरण की रज, गंगा स्पर्श कोले पाप दूर होय। साधु दर्शन पाए सर्व सिद्धि। चैतन्य महाप्रभु की बात है। गंगा में जब डुबकी लगाते तभी पाप जाएंगे, लेकिन साधु के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। देखिए विष्णु पुराण की बात है, 100 बार गंगा में डुबकी लगाने से जो लाभ आपको मिलेगा, वही लाभ यमुना में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाएगा। एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने से जो फायदा आपको मिलेगा, वो यमुना जी का दर्शन करने से मिल जाएगा। विष्णु पुराण। और साधु दर्शनम पुण्यम कह दिया। साधु दर्शन पहले सर्व सिद्धि है, उनका दर्शन करने से सब सिद्धि मिल जाता। तो मतलब क्या हुआ? साधु और यमुना जी बराबर है तोलने से। यमुना जी वैकुंठ में गोलोक में बहती है, और साधु के हृदय में भगवान बैठे। साधवो हृदय में कह दिया। फिर क्या? हम लोग यहाँ सभी वैष्णव है, हम लोग से बड़े वैष्णव है। वैष्णव क्या कहता है साधु को देख करके? तुंडे तांडव नीरतिम वितरते तंडावली लब्धे, कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदे विस्पृहम्। हे भगवान, मुझे हजारों हजारों जीव दे दीजिए, जिससे मैं साधु के गुण गा सकूं। क्यों? साधु नाम हृदयम तु अहम, भगवान भागवत में कहते हैं। देखिए साधारण बात नहीं है, साधु का हृदय है भगवान। फिर क्या? कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटते कर्णा अर्बुदे विस्पृहम्। अर्बुद कोई हिंदी में नंबर नहीं है, अर्बुद एक संस्कृत का नंबर है। इतने कान मुझे दीजिए हे भगवान, जिससे मैं साधु के मुखारबिंद से निकले हुए अमृत प्रवाह को सुन सकूं। इसका मतलब क्या है? ना अनगिनत जीव से, अनगिनत कान से शेष भगवान जिस कृष्ण कन्हैया का चिंतन करते हैं, नाम बोलते हैं, जिनके बारे में बखान करते हैं, वही स्वरूप है साधु का। ये साधु महात्मा जो बैठे हैं, दर्शन करने मात्र से भगवत कृपा मिल जाएगी। इन्हीं के कारण देश चल रहा है। ये मैनेजमेंट के कारण नहीं चल रहा। मैनेजमेंट तो हिरण्यकशिपु भी करता था, राजा बेन भी करता था। इतना मैनेजमेंट नो,
भजन का प्रभाव, वो तपस्या का प्रभाव, वो उनके दर्शन का प्रभाव, उनके चलने का प्रभाव, उनके चरण धूलि का प्रभाव, ये साधु का जूठन खाने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की जूठन को महाप्रसाद कहते हैं, साधु की जूठन को महाप्रसाद कहते हैं। ये साधु महात्मा आ गए, हमको एक साथ ये जो दर्शन मिला, मेरा सौभाग्य, आपका सौभाग्य, आप सबका सौभाग्य है। मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल देता हूँ क्योंकि मेरे जो भक्त यहाँ बैठे सारी दुनिया भर से आए हैं, जगह जगह से लाखों रुपया उनके टिकट का खर्च है, वो बेचारे यहाँ बैठे हैं। मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोल देता हूँ। Please try to understand. The personalities sitting here, they are not ordinary. Everybody cannot get that opportunity to see such great saints sitting here. You may be thinking they're just bearded and matted heads having some turbans here. No, not like that. Sadhus, their heart, Krishna sits and is fructified form. Lord Krishna is sitting. Hridye se Arjuna tishtati Brahmayan. We are moving around everywhere all over the universe, having many births. But these saintly people, they have the heart in which Lord Krishna is sitting in fructified form. This is Jagat Guru himself, Vallabhacharya Ji Maharaj. They are Dwaracharya sitting around me. There are Mahamandaleshwars. There are Akhada heads. Their personalities. Who Lord Krishna wants to see. You cannot understand sadhu unless you chant Hare Krishna Mahamantra. You have to chant. Then only you can understand the value of these great sadhu Mahatmas. We are coming from America, England and Europe, different places. Try to think. You have spent so much and sadhus came to you. You must be very pious person. You might have done many pious deeds in your previous lives. That's why you are able to see all the sadhus sitting in one place. You have to go to a temple to see one sadhu. You have to go to one temple to see 10 sadhus. Here there are leaders of those thousands of sadhus sitting in front of you. How much more pious you want to be? Yes, it's unimaginable because Lord Krishna, look, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Vaishnava Padadhuri, I spoke like that. Already I spoke in Hindi, but I speak to you in English. The dust coming from their feet, if you put on your head, you surely get liberated, even if Krishna don't want you to receive liberation. Just see how powerful these people are. Just imagine. Vaishnava Padajal, these are Vaishnavas, not only Vaishnavas, they are leaders of Vaishnavas. Many Vaishnavas stay under them, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They chant Sitaram. Just in the 24 hours, they are on duty. Their duties are 24 hours. Satatam Kirtayanto Mam Yatam Tashat Durabhara. It's not ordinary. They have come to see you. You usually supposed to go and see them. They are all at one place. Now I will speak in Telugu. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు.
అదృష్టవంతులా వచ్చారు గంగా యమున సరస్వతి త్రివేణి దగ్గర చాలా కష్టపడి వేడి స్థలం నుండి చలి స్థలం వచ్చి ఈ టెంట్ గేట్ లో ఉండి ఏదైనా సరే మీరు పెట్టారు తిని తినలేని దినుసులు మీరు అన్నభోజి ఎక్కడ పూరి దూరి దొరుకుతుంది మీకు మీరు కష్టపడి తపస్సు చేసి హరినామ సంకీర్తన చేసి సాధు పొంగల యొక్క దర్శనం చేసి ఉన్నారు. ఈ సాధారణ వస్తు కాదు, ఈ పెద్దవాళ్ళు కనపడతారు, చిన్నవాళ్ళు ఈ పెద్దవాళ్ళు జగద్గురు కూర్చుంటున్నారు మా దగ్గర. వారే అధ్యక్షుడు, ఈ మహామండలేశ్వరుడు, చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు. సో మీరు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడను, సమయం లేదు, వాళ్ళకు కూడా పనిలో ఉన్నాయి. మీరు భజన చేయండి, చాలా మంచిది. నేను హిందీలో కూడా మాట్లాడాను, మీకు అర్థమైంది. అయితే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాను, మీకు అర్థమైంది. సో ఇందువల్ల నేను ఎక్కువ మాట్లాడాను. श्री राधा गोविंद भगवान की बात महामंडलेश्वर मंत्र श्री कृष्ण महाराज की जय, आसीन संतों की जय। एक बार जोरदार पूज्य महाराज जी के तालियों के माध्यम से आप सभी श्वासाओं के द्वारा आप अद्भुत पूज्य महाराज जी की आशीर्वचन आप सबने श्रवण आप्याय धनंजय भावं प्रजामति रणनीवा अक्षमावस्तेर ईसदमावस कुंसो ध्रुवा श्रीमान मुरलीधर जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग 3 महीने से कुंभ की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। We belong to Nirvani Ani Akhada. There is a Akhada means place of protection. Place of protection. We belong to Nirvani Ani Akhada. That is the name. The present here on the dais are Srimad Muralidhar Ji Maharaj. He is the topmost. He is sitting next to me here. We are chit-chatting. Next one is Sri Mahant Mohan Das Ji Maharaj. Then Rashtriya Mahasachiv means Chief Secretary. Secretary in Chief is Nandaram Das Ji Maharaj. I think he is sitting next to me here. Then again another Chief Secretary is Satyadev Das Ji Maharaj. He is sitting just next to me. Then the Secretary Swami Khaki Akhada. There is some khaki means police uniform like that. That is Khaki Akhada means that there is an institution. That is Sri Prem Das Ji Maharaj. We belong to this Akhada called Nirvani Ani Akhada. Then next one is Digambara Akhada. Usually in Telugu, Digambar means clothless, but it's not. That personalities are very dedicated in the biggest Akhada. Akhada means place for protection. Well, the personality present is Srimad Ram Kishore Das Shastri Ji Maharaj. Then another one is Srimad Vaishnav Das Ji Maharaj. Then Chief Secretary of National Chief Secretary Janki Das Ji Maharaj. And another National Secretary Balaram Das Ji Maharaj. They are all present here. Then comes Nirmohi Akhada. There are 3 akhadas, means 3 sections of branches of places of protection. Akhada, that is in Sanskrit. Nirmohi Akhada. Srimad Rajendra Das Ji Maharaj, Srimad Ramji Das Ji Maharaj, and the Chief Secretary for whole nation in that Akhada is
Narendra Das Ji Maharaj, then Chief Secretary another one, Mahesh Das Ji Maharaj. Then comes from Ayodhya. Ayodhya is place of Hanumanji, called Hanuman Gadi. It is like a hillock. And there is a Hanuman temple protecting our personality of Godhead and his place called Ayodhya. From there is Mr. Rajesh Das Ji Maharaj. Rajesh Das Ji Maharaj who just came here and spoke. Then Rajesh Das Ji Maharaj, Ramesh Das Ji Maharaj, Mansi Dr. Mahesh Das Ji Maharaj, there was a Pahilwan who came here too, Gopal Das Ji Maharaj, and everybody else with great personalities and saints who have come here. They are not ordinary, I have told you. That there will be people coming very soon. They are coming very soon, they will come. Just 2 weeks, 3 weeks ago, the personalities came to our temple there in Vrindavan. They will soon be coming there alphabetically. I will introduce you, but let me tell you right now, because I may not find more time to tell you. There is four sampradayas together, there are 4 sadhus, great personalities sitting there like a Supreme Court, like that. There is Sriman Pulur Bihari Das Ji Maharaj, who had come to our place. And then Sriman Ras Bihari Das Ji Maharaj, then Sriman Savaya Babaji Maharaj, then Hanuman Das Ji Maharaj. There are many other personalities sitting here. They have come with these great personalities like that. So, thank you very much for helping to do such a big festivity. I really bless you all as a spiritual master for helping to hold such a great function where all these great personalities, sadhus, mahatmas, not only that, leaders of sadhus have come. At once you are able to see so many of them, you are very fortunate. This is like the personality of Godhead manifested here in the forms looking like that of sadhu. Some of them have beards, some of them have shaved hairs, but all of them have the Supreme Lord in their heart in a fructified form. So thank you very much for coming to India and learning spiritual science. We are not teaching religion as sectarianism. We are teaching spiritual science called Hinduism. Because of these great personalities sitting here, this nation is maintained. So thank you very much. Gaur Hari. So when these great personalities arrive, you stand up for welcoming them, and as soon as they climb up on the dais, you please sit down to honor them. This is very important. If you stand when they are on the dais, it does not look like you are honoring them. Therefore, please sit down. You can sit in the front, there is a lot of space. You can sit there because it looks like that you are honoring them. When they are arriving, you are honoring by standing. When they are coming up, you are sitting down and honoring them. Thank you very much. चलो हमसू भैया शुरू कराओ पूजन हनुमान जी का। आइए महाराज जी। महाराज जी आप हमारे इस्तेमाल क्या है?
हाँ ये सब है आइए। अभद्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मृत पुंडरीका छठ पुनातु सभाभ्यंतरा शुचि पुंडरीका छठ पुनातु आचम्यम ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः तो प्रक्षाल्यम ऋषिकेशाय नमः। हाँ स्नान करो ये पहले। ओम सहस्रसे रखा परखा सहस्राक्षा सहस्रपाद सभो में गौ सर्वतस्तत्वा ततिष्ठदशंगुलम्। स्नानम समर्पयामि। हनुमान जी चरणभ्यो नमः गंधद्वारां दुराघर्षां नेत्रपुष्टां करेश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपहवेश्वरीं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धादयो सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहतां श्रेष्ठते लक्ष्मी च पद्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं सर्वलोकं मैखाणं माल्यादीनि पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धेन मालित्यादीनि वै प्रभो व्याहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां। भोग का सामान जो है ये तुलसी जल भोग का। हाँ हाँ थोड़ा सा जल गिरा दे जमीन पे। नाभ्यासे दंडर्क्षकं शेषौदौ समवर्तता पद्भ्यां भौमदृशा श्रोत्र तथा लोकान् कल्पयन्। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हनुमान जी चरणभ्यो नमो नमः। पुष्प दीजिए, अच्छा दीजिए। एतानि अर्चनानि यत्र अक्षतगन्धपुष्पधूपदीप नैवेद्यताम्बूल पूंगी फल दक्षिणाद्रव्यं सहितं समर्पयामि। तृप्यतां में चढ़ा दीजिए भोग का। शेषौदौ हौ समवर्तता पद्भ्यां भौमदृशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। वेदाथे भूतगमायः अग्निदेवा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा हवसागमन्येह भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येम भवेजगणाः सत्तानो सर्वसे माहिदेवहितं यदायुः शतमेन्नु शरणो अन्तिदेव यत्रानशखा जरसन्दरो नम्ब पुत्रासो यत्र पितरो भवन्त्यमानं मयानि युगतायुर्गन्तोः अधिकृतो निरन्तर्षमनुदं माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव हरितः हमारे प्रजागवाम गौ शान्तिरन्तर्षमं शान्तिरापः शान्तिरोधनप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राभ्यां मन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलयथा चूतमुद्भूतनारिणम् अमृतेन प्रथं भ्रष्टा मुवादेहाधारिणम् दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं गुणगुण मैजिक हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। राम जी के नाम ने पाथर भितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे।
पाथर भितामने तो पाथर भितारे जो न जपे राम है किस्मत के मारे राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे राम नाम चंदन राम नाम देव जपे संत तन बंदा। गुरु भाइयों का आज मनोरथ सिद्ध हुआ। इनकी चिर प्रतीक्षा थी हम अपने गुरुदेव को जगत गुरु के पद पर देखें। कहाँ है हमारे विश्वनाथ दास जी ना? ये सभी महापुरुषों के पास, संतों के पास बार बार जाकर के और निवेदन करते रहे। आज उनकी भावना पूर्ण हुई। यही एक शिष्य का कर्तव्य है।
कृष्ण बलराम स्वामी प्रभुपाद की जय। चलो चलो ओ प्रधान जी गिलास दे दिया आपको ना रसोई में चौंका कर दो ये रखो। हाँ तो भगवान ने जो दूध खिलवा वो पोती लगा के भगवान को बात उस समय कर देता श्री राम श्री राम। खाली